Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our phonics. You know what are the phonics? The study of sounds. So before discussing the hard and soft sound from the book 4, page number 2, we must know what are the sounds itself. So sounds can be defined as the smallest unit of a speech. यानी सबसे छोटा हिस्सा स्पीच का, गुफ्तगू का सबसे छोटा हिस्सा साउंड कहलाता है. As you know that there are 26 letters in English language, and these 26 letters of English language form 44 speech sounds. And these 44 speech sounds are further divided into three main categories: the vowels, the consonants, and the diphthongs. First of all, we'll discuss the vowel sounds. There are 12 vowel sounds, and these are pronounced without any obstacles. Then 24 consonant sounds, and these are pronounced with some kind of obstructions. And the third category is diphthongs. These are the combination of two vowel sounds, and these are total 8 in numbers. This was just a background information that you must keep in your mind before discussing the hard sound of the letters C and G and the soft sound of letter C and G. Alright, so the soft sound of letter C is S, S, just like S, and the soft sound of alphabet G is J, J, just like J. Letters C and G give soft sound when these two are followed by the letter I, E and Y. इसका मतलब कि C और G ये दोनों अल्फ़ाबेट्स सॉफ्ट साउंड देंगे अगर इन दोनों के बाद आने वाला लेटर I है, E है या Y है. For example, soft sound of C in city, cell, cyclone. अगर आप इनको गौर से देखें तो C के बाद I, E और Y है. And soft sound of G in giant, gel, gym. अगर आप इनको गौर करें तो यहाँ भी G के बाद I, E और Y है. The hard sound of letter C is K, K, just like K. The hard sound of letter G is G, G. Letters C and G gives hard sound when they are followed by A, O and U or any other sound. For example, hard sound of alphabet C in cat, cold, cup, and hard sound of alphabet G in game, gold, gum. अगर आप C और G की इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि C और G के बाद साउंड A, O और U आ रहे हैं, जिस वजह से C और G अपने हार्ड साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. आई विश गाइज आपको हार्ड और सॉफ्ट साउंड ऑफ C एंड G की बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप काइंडली इस वीडियो को रिपीट करें और अच्छी तरह से इसको समझें. आपका होम टास्क ये है कि आपने लेटर C एंड G के सॉफ्ट साउंड के भी 10 वर्ड्स लिखने हैं और हार्ड साउंड के भी 10 वर्ड्स लिखने हैं. एंड बुक 4 पेज नंबर 3 भी आपने सॉल्व करना है.